गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर्स हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 11 है। तो आज भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ये 11th प्रैक्टिस लेक्चर है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, write one, you have to write one difference between asexual and sexual mode of reproduction। एक डिफरेंस बताने हैं आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट वन डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual mode of reproduction। Then which species is likely to have better chances of survival, मतलब किस स्पीसीज की सर्वाइवल चांसेस बेहतर होगी ऑन द वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, एक जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, और एक जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, ओके, और दूसरा जो रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली उसका। तो बच्चों, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोपैरेंटल होता है, दैट इज यूनिपैरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोनोपैरेंटल, या कह सकते हैं उसको यूनिपैरेंटल। उसमें कोई गैमिट का निर्माण नहीं होता है, नो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, ना ही उसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन वो नहीं होता है, और थोड़ा वेरी लिटिल वेरिएशन और नो वेरिएशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली बाइपेरेंटल, इट इज बाइपेरेंटल इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मियोसिस इसमें होता है, एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। ओके, तो डिफरेंस है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वन डिफरेंस दैट इज asexual reproduction, आंसर है asexual reproduction, sexual reproduction, एक reproduction is monoparental, आप इसको यूनिपैरेंटल भी लिख सकते हैं, और यूनिपैरेंटल मोनोपैरेंटल और यूनिपैरेंटल विथ नो गैमेट्स, नो मियोसिस, इसमें कोई मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, नो मियोसिस, and very little variation, this is what, इसमें वेरिएशन बहुत कम, वेरी लिटिल वेरिएशन और नो वेरिएशन। ओके, इसमें मियोसिस नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपैरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और यूनिपैरेंटल, उसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, क्योंकि मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्वड हियर। मियोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर इज नॉट प्रेजेंट, एंड सो वेरी लिटिल वेरिएशन यहां देखने के लिए मिलेगा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज एसेक्सुअल की बात हुई, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इज बाइपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इज जनरली बाइपेरेंटल, कुछ जनरली बाइपेरेंटल, विथ गैमेट्स इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बाइपेरेंटल involving fusion of gametes,
इसमें गैमेट्स के फ्यूजन होते हैं, इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें मियोसिस होगा, गैमेट्स मियोसिस इसमें होंगे, एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशन। इसमें बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, दिस इज डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपैरेंटल, मोनोपैरेंटल इज सो कॉल्ड यूनिपैरेंटल, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हेंस नो मियोसिस, एंड वेरी लिटिल वेरिएशन इसमें होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जनरली दिस इज बाइपैरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाइपैरेंटल होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एंड मियोसिस इसमें होगा, मियोसिस जो होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस उत्पन्न होंगे, और दिस थिंग। अब दिस वाज द, ये यहाँ तक का हुआ आपका डिफरेंसेस, वन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फिर है कि which species is likely to have better chances of survival? किस species, which species, the species which is reproducing sexually or species which is reproducing asexually, which species have better chances of survival? Okay, तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस स्पेसीज में, विच स्पेसीज हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल? वैसे स्पेसीज वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एंड अदर एसेक्सुअली, किसके सर्वाइवल के बेटर चांस होंगे? ओके, दिस यू हैव टू गिव आंसर, आपको ये आंसर देना है। अब बच्चों बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, better chances of survival, chances of survival, सर्वाइवल के बेटर चांसेस। बच्चों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस कम होते हैं क्योंकि उसमें गैमेट के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, नो मियोसिस ऑकर्स, नो क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो। तो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ड्यू टू रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर, रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है इन ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स, सारे बहुत प्राय सभी कैरेक्टर्स में। बट बेटर चांसेस सर्वाइवल होंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्यों? ड्यू टू रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रोड्यूसेस वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है इन ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स। फर्स्ट थिंग इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मेंटेन एज वेल एज इंप्रूव्स वीगर एंड विटालिटी, ये इंप्रूव करता है वीगर को और विटालिटी को ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, अब इसमें क्या होता है कि वेरिएबिलिटी एंड वैलिडिटी, vitality, variability and vitality are helpful to organism in better adaptability to of environment. Okay, variation and vitality are helpful to organism in better adaptability of environment. So these things why sexual reproduction has better chances of survival. Organism reproducing sexually have better chances of survival. Okay, the better chances of survival due to reshuffling of chromosome. Due to reshuffling due to reshuffling of chromosomes and crossing over
Sexual reproduction produces variation. Sexual reproduction produces variations. Okay, in almost all character. In almost all character. In almost all characters. Second is sexual reproduction maintains as well as improves vigor. First why this मेरा second sexual reproduction maintains as well as improves vigor and vitality of the individual. Third is variability and vitality. And variability and vitality are helpful to organism. Helpful to organism in better adaptability of environment. Stability of environment. Okay, so better adaptability of are helpful to organism in better adaptability of environment. तो बच्चों 3 points in favor of sexual reproduction is that better chances of survival आपके sexual reproduction में होंगे due to the shuffling of chromosome and crossing over. Sexual reproduction produces variations in almost all characters. तो इसमें होता क्या है कि due to reshuffling of chromosomes and crossing over, sexual reproduction produces variations in almost all characters. Sexual reproduction maintains as well as improves vigor and vitality of the individuals. Third is variability and vitality are helpful to organism in better adaptability of environment. So these are the 3 points in favor of sexual reproductions. और यहाँ हम कर सकते हैं कि क्या कि sexual reproduction जो होता है कि ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे देन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल हैव better chances of survival than a sexually reproducing organism. So these are the points, 3 points in favor of sexually reproducing organism which makes them better survival in their environment. And next we have another question. Question है डिफाइन टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. आपको डिफाइन करना है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. You have to define about unisexual and bisexual organism.
सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप भी questions are of very important. Questions for 2024. This was the first question of 11th practice lecture. अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकंड, define the term unisexual and bisexual. Define the term unisexual. Define the term unisexual. Define the term unisexual and bisexual, giving one example of each. Giving one example of each. Okay, we have to define the term unisexual and bisexual. तो क्या करना है? Define the term unisexual and bisexual, giving one example of each. Okay, तो चलिए डिफाइन करते हैं हम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। आंसर इज फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल। ओके, इट इज ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो वैसे इंडिविजुअल्स आर यूनिसेक्सुअल एंड इट इज एन ऑर्गेनिज्म। इट इज एन ऑर्गेनिज्म having male and female sex organ, having male and female sex organ, having male and female sex organs on two different types of individuals. Okay, it is an organism having male and female sex organ on two different type of individual. अलग-अलग types of individual. Males are different and females are different. जैसे कि human हो गया, human we have male and female. मतलब अलग-अलग sex organ male और female के पास है. Human male have different sex organ और human female have different sex organ. तो क्या है कि it is an organism having male and female sex organ on two different types of individual. Female sex organ must have with female, male sex organ associated with male. So this examples में papaya.
पपाया इज ए प्लांट, इसके लिए मेल और फीमेल अलग अलग होगा, आप देखे होंगे। पपाया एग्जाम्पल में पपाया, पपाया यूनिसेक्सुअल होता है। हम ह्यूमन बीइंग आर आल्सो यूनिसेक्सुअल, ह्यूमन, काउ, डॉग, ये सब यूनिसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे? चलिए, इट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग, इट इज एन organism having both male and female sex organ, male and female sex organ present in the same individuals, organs present in the same individual, in the same individuals, सेम इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कहाँ देखने के लिए होगा, मिलेगा आपको अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम अर्थवॉर्म, एक ही अर्थवॉर्म। दूसरा मस्टर्ड देखे होंगे आप, मस्टर्ड इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एसोसिएटेड विद सिंगल इंडिविजुअल। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स। जैसे कि बच्चों आपको हम बता दें कि इसमें होगा अर्थवॉर्म, सेम इंडिविजुअल, दैट इज एग्जाम्पल अगर लेंगे आप तो किसका लेंगे? अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म हो गया आपका। सेकेंड, यो रोज, आपने रोज कटिंग की होगी, रोज, मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, दैट इज मस्टर्ड ऑयल खाए होंगे, मस्टर्ड। ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये बताया गया है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल को हमने डिफाइन किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, डबल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं दोहरा निषेचन। हिंदी में से दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। Trying myself to make you strong in biology. इसकी फर्स्ट आई एम मेकिंग सम क्वेश्चन, मेकिंग यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। These questions for 2024 exams which we will face in March 24th, 2024. So, third question है बच्चों, explain double fertilization. This is important. Explain what? Double fertilization. पहले इसका हम आपको आंसर देते हैं, फिर इन लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में हम इसके डायग्राम के साथ आपको डबल फर्टिलाइजेशन को समझाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन कीजिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? आंसर, the phenomenon of, it is the phenomenon of two male gamete,
phenomenon of two male gamete. Phenomenon of two male gamete. Phenomenon of two male gametes fusing with different cells, with different cells in the same embryo sac, in the same embryo sac to produce two different structure, to produce two different structure. पढ़ेंगे हम लोग लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर में कि दिस इज ए स्टाइल, दिस बिकम ओवेरी, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ओव्यूल्स के बारे में। पॉलिन ग्रेन्स जब पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पर आएंगे तो वो पॉलिन ट्यूब बनेगा, पॉलिन ट्यूब, इसके बारे में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, आपको डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द फिनोमिनन इन विच टू मेल गैमेट, ये ऐसा फिनोमिनन है जिसमें टू मेल गैमेट, देखिए यहां पर फिनोमिनन इन विच टू मेल गैमेट्स फ्यूजिंग विथ डिफरेंट सेल्स इन द सेम एम्ब्रायो सैक, एक ही एम्ब्रायो सैक में डिफरेंट सेल के साथ टू मेल गैमेट फ्यूज करते हैं टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। Two different structures are called, it's called double fertilization, is called double fertilization, इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? एग से, टू फॉर्म डिप्लॉयड टू एंड कंडीशनल जाइगोट। one male gamete fuses with egg, to form diploid zygote, diploid zygote, to form diploid zygote. Zygote condition is 2n and it is called generative fertilization. One male gamete fused with egg, to form diploid zygote, and this is called generative fertilization. It is called generative fertilization. It is called generative fertilization. Okay. Zygote grow to form embryo. ये zygote grow to form embryo. Zygote here. Zygote grow to form embryo. Okay, and second male gamete fuse with diploid secondary nucleus. Second male gamete किससे फ्यूज करेगा? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो डिप्लॉयड एंड ऑफ द सेंट्रल सेल, हम यहां पर भी लिख देते हैं कि सेकेंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन था, अब सेकेंड मेल गैमेट fuse with diploid secondary nucleus,
nucleus of central cell, it produces it 2n और फिर फ्यूज हुआ n, दिस फॉर्म 3n ट्रिप्लॉइड, दिस फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी endosperm, and this fusion is called triple fusion. This fusion is triple fusion. इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. This fusion is called triple fusion or vegetative fertilization. It produces nutritive tissue called endosperm. This fusion is triple fusion, okay, and triple fusion is also called vegetative fertilization. इसको vegetative fertilization भी बोलते हैं. और it produce nutritive tissue called endosperm. It produces nutritive tissue called endosperm. ओके, और ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. तो बच्चों ये था डबल फर्टिलाइजेशन. क्या हमने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? Double is the phenomenon in which two male gamete fusing with different cells in the same embryo sac to produce two different structure. सेम embryo sac के साथ जो है टू मेल gametes फ्यूज करते हैं तो टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग से टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. अब जाइगोट ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल्स, इट फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म. और इस तरह के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. और भी इससे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म. ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू को जन्म देता है जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म. ओके, तो बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, अब we will study about sexual reproduction of plants. बाद में पढ़ेंगे इसको. अब पहले हमने डबल फर्टिलाइजेशन को देखा. अब हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा डबल फर्टिलाइजेशन. तो बच्चों ये जो चैप्टर 7 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये प्रैक्टिस लेक्चर है 11. और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है. अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में. तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.